हेलो माय डियर बैंकर्स, हाउ आर यू टुडे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि आप बैंकर हैं और इनफैक्ट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काम भी कर रहे होंगे। राइट, उनका काम ही होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला जो डिपार्टमेंट है वहां पे। राइट, एंड आपको ये भी पता होगा दैट इन जैब एग्जामिनेशन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है और इसके क्या क्या टारगेट्स हैं और अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्या रिवीजन करा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, इसकी बात आज हम करेंगे। ठीक है, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम जिस एरिया में काम कर रहे होते हैं ना, उस एरिया की कुछ कुछ थियोरेटिकल नॉलेज हमसे मिस हो जाती है। तो आज हम उसी नॉलेज की, उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ताकि आपका एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। First of all, what is priority sector lending? So as the name says, my dear friends, priority sector lending. Lending as you know, ठीक है, lending का मतलब तो पता ही है। ठीक है, and priority sector, there is a certain sector, there are certain sectors which are of priority, right? And the RBI has mandated all the banks that you have to provide loans to these priority sector lending because they face the credit shortage, but at the same time they are very important for the economic growth. ठीक है, so PSL is an RBI mandated requirement for banks to allocate a set portion of their loans, ठीक है, to key priority sectors that face credit shortages but are crucial for inclusive economic growth. Alright, so basically there are certain sectors which are defined by RBI, which we'll talk about later. So there are certain sectors which are listed by RBI which generally face credit shortages, but at the same time they are very important for the inclusive economic growth. So the RBI has mandated that the banks have to lend these priority sectors a certain portion of their loans. Okay, and then we have a priority sector lending certificates which are tradable certificate issued against priority sector loans. ऑलराइट, मतलब अगर कोई बैंक, किसी बैंक ने अगर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के टारगेट को कंप्लीट नहीं किया है तो वो किसी दूसरे बैंक जिसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट को एक्सीड कर दिया है उससे सर्टिफिकेट्स ट्रेड कर सकता है, उसको पैसे देके उससे सर्टिफिकेट ले सकता है ताकि उस बैंक के जिसने टारगेट पूरे नहीं किए थे उसके टारगेट्स पूरे हो जाए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ पीएसएल इन द कंट्री। So first of all, if you remember, in the year 1969 there was a Gadgil committee. In the year 1969 there was a Gadgil committee which recommended the area approach leading to the lead bank scheme for regional credit planning. I hope you know what is the meaning of lead bank scheme. So कुछ एरिया एलोकेट कर दिया गया था बैंकों को और उनको बोला गया था that this particular bank will act as the lead bank in that area, and that bank will have the responsibility of एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन दैट एरिया। ठीक है, सो इसको हमने क्या बोलते हैं, लीड बैंक स्कीम। ठीक है, इसी से लीड बैंक स्कीम से निकल के आया फिर आगे चल के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। व्हेन इन द ईयर 1969 सेम Nariman committee supported the Gadgil committee's recommendation and it has recommended that each public sector bank should adopt certain districts as lead bank to boost the priority sector lending. ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर में जो सेक्टर्स है ना जनरली वो वही है जिनके पास बैंकिंग का एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो सरकार ने सोचा, आरबीआई ने सोचा, या इन कमिटीज की जो रिकमेंडेशन थी, सबसे पहले स्टार्ट ऐसा हुआ कि जो एरियाज जहां पे बैंकिंग का एक्सेस ही नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस ही नहीं है, वहां पे एक एक लीड बैंक हम स्थापित करेंगे और उन लीड बैंक्स का काम होगा उन अंडर सर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को लोन देना, जो कि बाद में क्या जिसको नाम दिया गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, and then PSL was formalized in 1972 based on RBI's informal study group's report of the year 1971. Initially there were no targets which were set for the banks, but in 1974 the banks were advised to raise PSL to 33.3% by 1979, but this was only the advice. ठीक है, there was no mandate by the RBI, but finally on the recommendations of Krishnaswamy committee in 1980, which recommended a 40% PSL target by 1985, और उसके बाद RBI ने mandate कर दिया a particular target which has to be achieved by all the banks under PSL. ठीक है, and then Usha Thorat committee of 2009 endorsed the continuation of the lead bank scheme
फॉर इट्स रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो ये छोटा सा इवोल्यूशनरी स्टेजेस था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। If we talk about the categories under PSL, so there are 8 categories: agriculture, MSMEs, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy and others। और इन others में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है weaker sections। ठीक है, weaker sections of the society, जिसके अंदर अभी अभी RBI ने अमेंडमेंट भी करा था। ठीक है, तो ये 8 कैटेगरीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के, जहां पे आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है कि आपको अपने लोन का कुछ परसेंटेज इन एरियाज में लोन देना ही देना है। ठीक है, चलिए, now what are the targets and sub targets? What are the targets and sub targets? So सबसे पहले if we talk about the domestic commercial banks and foreign banks with 20 branches and above, so in their case total PSL target is 40% of ANBC adjusted net bank credit or CEO BSE, which is credit equivalent amount of balance sheet exposure, whichever is higher. In case of foreign banks with less than 20 branches, it is 40% again. In case of regional rural banks, it is 75%, and in case of small finance bank, it is once again 75%. And there are no such targets for the payment banks. Do remember that. There are no such target for the payment banks. Okay? Now there are certain sub targets as well. Out of this 40%, out of the total PSL targets, 18% must go to the agriculture sector, and this is for domestic commercial banks and the foreign banks with 20 branches and above. For foreign banks with less than 20 branches, there is no sub target. RRBs के लिए एग्रीकल्चर का टारगेट 18% है, एंड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इट इज अगेन 18%. फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5%, नॉन एप्लीकेबल 7.5% and 7.5%. For weaker sections 12% by domestic commercial banks and foreign banks with 20 branches and above, 15% by regional rural banks and 12% by small finance bank. These are very important targets. In fact, whichever examination you are preparing for, ये target बहुत important है. For urban cooperative banks, for UCBs, for urban cooperative banks, there are different targets. Total priority sector is 60%, which earlier was 75%, and it has been recently reduced to 60%. Micro enterprises 7.5 and advances to weaker section 12%. Alright, so I hope my dear friends the targets are clear. If the targets are not cleared, so in that case what happens, जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाता है, एंड दिस फंड एज यू नो इज बीइंग मेंटेन्ड बाय NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस, क्या क्या रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसकी बात भी हम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the loan limits for education sector has been increased. It was earlier rupees 20 lakh and now it has been increased to rupees 25 lakhs. Okay, the RBI has increased the loan limit under PSL for education sector, that is from 20 lakh to 25 lakhs. This is very important. ये revised guidelines से पक्का question आने वाला आपके एग्जाम में, I have no doubts about it. Renewable energy के सेक्टर में the loan limits for renewable energy projects like solar, wind plants, bio energy plants, hydro power plants, it has been raised from 30 crores to 35 crores per borrower. ठीक है, per borrower it has been raised from 30 crores to 35 crores. However, the loans for individual households for renewable energy remains capped at 10 lakh per borrower. अगर हाउसहोल्ड के लिए मान लो कि आपको अपने छत के ऊपर कोई सोलर पैनल लगाना है छोटा सा, सो इन दैट केस द लोन लिमिट इज रुपीज 10 लाख पर बोरोवर. ठीक है, दैट वाज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. Now for urban cooperative banks, as I already told you, the targets have been reduced from the earlier 75% of ANBC or COEBE, whichever is higher, to 60%. Now the target is 60% for urban cooperative banks. Housing sector में क्या change किया है? The loan limits are increased to boost affordable housing, particularly in tier 3 to tier 4 cities, and this increase is quite technical and I believe JAIIB will not ask this. And last but not the least, ये बहुत important है, जो वीकर सेक्शंस की कैटेगरी है उसको एक्सपैंड किया आरबीआई ने, एंड नाउ द ट्रांसजेंडर आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशंस ऑफ वीकर सेक्शंस कैटेगरी अंडर पीएसएल, एंड इट फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेटर क्रेडिट एक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा मुश्किल है हमारे देश में या इनफैक्ट पूरी दुनिया में, लोग नौकरियां भी नहीं देते, तो मजबूरन उनको बेगिंग जैसे चीजों में एंगेज होना पड़ता है. सो यहाँ पे आरबीआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बाय इंक्लूडिंग द ट्रांसजेंडर इनटू द डेफिनेशंस ऑफ वीकर सेक्शंस कैटेगरी अंडर द पीएसएल. ठीक है,
ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, तो यह था शॉर्ट एंड क्रिस्प द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. I hope the priority sector lending, the targets, the categories, the amendments are clear. You are definitely going to have one question or two question maybe from this 10 minutes class. Thank you very much. I will be coming up with more videos on Indian economy and Indian financial system. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.